the responsibility we carry as a citizen of a free nation. This year, we celebrate under the theme Nation First, Always First, reflecting our commitments to keep our country above all else. As we hoist the tricolor flag, let us remember the values it represents: courage, peace, and prosperity. Our journey since 1947 has been marked by significance from science and technology to art and culture. Yes, we must also acknowledge the challenges we face and work collaboratively to overcome them. Let us pledge to uphold the principles. Hello. Let us begin this auspicious occasion by honoring our nation with national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे जाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। The story of endless struggle and brave souls. To honor their sacrifice, let's begin with a welcome speech. I invite Sister Jolene to welcome the gathering. All. It's with great pride and immense joy that I welcome you all to this grand celebration of our Independence Day here at Courts Park. Courage and determination that binds us as Indians. 79 years ago, on this very day, our country broke the chains of colonial rule. Thanks to the tireless sacrifices of countless freedom fighters who dreamt of an India that would stand tall, free and proud. On behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt welcome to our Courts Park team members, dignitaries, invited guests and every patriotic gathered here. Your presence adds value to this occasion, and together we will honor the legacy of those who gave us this priceless gift of freedom. As we hoist our tricolor and let it fly high in the morning breeze, let it remind us of our responsibility to safeguard the ideals of liberty, equality and justice, and to contribute in our own ways to the growth and progress of our great nation. Let us also take a moment to appreciate the spirit of community here at Courts Park. This gathering is proof that even in our busy lives, we can come together to celebrate what truly matters, our shared love for our country. Once again, a warm welcome to all of you. Jai Hind. And we love it very much. Yes, God, we pray for our parents, teachers, and all those who work so hard to make this world a better place. Guard us from dangers of every kind. Help us to love each other so we may all live in peace and harmony. Let's pray with all our hearts for our motherland. Let's stand united now and hold each other's hand. Let's come together, lift up our hearts to our Maker. Let's pray for justice. Let's pray for peace. Let's pray for unity. Let's pray. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray. Let's pray. Let's pray for
and harmony. Graciously bless our nation with prosperity. Bring us together, teach us to love one another. Let's pray for justice. Let's pray for peace. Let's pray for unity. Let's pray. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray for leaders and those in authority. May God inspire them and guide them as they lead with divine wisdom, so we may have a better future. Let's pray for justice. Let's pray for peace. Let's pray for unity. Let's pray. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray, children, that they may have your grace to overcome the challenges that they may have to face. Let's pray for our brethren who dwell in poverty. Save us from disasters and calamity. Let's pray with all our hearts for our motherland. Let's stand united now and hold each other's hand. Let's come together, lift up our hearts to our Maker, to our Maker. Let's pray for justice. Let's pray for justice. Let's pray for peace. Let's pray for peace. Let's pray for unity. Let's pray. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray for India. Let's pray for India. Let's pray. Let's pray for India. Let's pray for India. Let's pray for India. Let's pray for India. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk in hand in hand. We will walk in hand in hand. We will walk in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall all be free. We shall all be free. We shall all be free. Who
ಭವ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು ಹೇಳು ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾರುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುವು ನನ್ನ ಭಾರತ ಹೇಳು ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುವು ನನ್ನ ಭಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಶಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನಿ ಫುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ಧ್ರುವದಲ ಶೋಭಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. Jai Hind. Part of an organized rhythmic pattern. We now have a beautiful prayer dance by the students. అనీతి వస్త్రమిడలించెను
చేరినిచ్చెను శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను విలాపములకు చేరినిచ్చెను శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను శిలానగముపైకి లాగినను సుఖ కళావళు మనసులోన నిలిచెను From grade 9 for a speech. Teachers, esteemed guests from the Kolsbach team, and all gathered one. A very good morning to everyone. Today, we have gathered here to celebrate one of the most important days in the history of our nation, our Independence Day. On this day, 15th August 1976, our country had broke the chains of colonial and stepped into the light of nation. Thanks for the sacrifices, courage, and vision of countless freedom fighters. We remember great leaders like Mahatma Gandhi, Netaji, Subhash Chandra Bose, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and many more who gave their lives, strength, sweat, and even their sweat. But their dreams were not just freedom from a foreign rule, but a free India with unity, diversity, and filled with opportunities of every citizen. Dear friends, freedom is not just a responsibility, it is a gift. The flag we hoist today is a symbol of unity, diversity, and strength. Let us keep this spirit in our hearts, minds, homes, schools, and playgrounds. Thank you. It is a super cool group dance by our students. Now, let's welcome them to take up their alma mater. पहलगाम के बायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या
क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? मैं लड़ जाना 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 है लहू में एक चिंगारी तुझसे जुनू तक रह जाना हर कतरा सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का लिया बदला। आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हम उसे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। तो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। The rhythmic and firing performance. Now I invite M. Ume Kulsum from grade 10 for a speech. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದ 79ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ದಿನ 1947ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತವು 2 ಶತಮಾನಗಳ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರಿಗಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವು ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಮಯ ಪಯಣವಾಗಿತ್ತು. 17ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 17ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಟಾಟಾ ಟೋಪೆ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯಂತಹ ವೀರರು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಯ್ಯಿಸಿತು. 20ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಅವರ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಹೋರಾಟವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಸಿತು. 1920ರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು 1930ರಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು 1942ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೋರ್ಸ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಸೈನಿಕರು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಇಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಾಜ ದಿನವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರಾದ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I call upon Dahalima and group for a mime. भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। विनाशी मच चुका है, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। जब बढ़ चढ़ जुल्म सर चढ़ने लगे, सर कटने लगे, जो सर उठने लगे, लोग घुटने लगे, पाँव बेड़िया गुलामी की, शोषण तो बना हर दिन की कहानी था। आवाज उठी, जाग उठी, जनता विद्रोह, विनाशक क्रांति की आग उठी, साथ उठी, चाहे 400 चिताएं ना आ उठी, देख मृत्यु समक्ष फिरंगी फौज भाग बस इनकलाब हर बोली ने, आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में, डोली में बस इनकलाब हर बोली में, आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में। तूफान रोके न रुकते हैं, प्रबल पर्वत भी झुकते हैं, मिल रक्त के बदले यहाँ आजादी सुभाष चंद्र जी कहते हैं। धन मन धन भारत को अर्पण, जन जन ने सब त्याग दिया, हुआ रंग भंग शासन फिरंग ले, सेना को संग संग राम किया। मुझे आजाद सीना तान के कहते नेताजी, चढ़ना परेशान से जंग की लगा दी बाजी, होश निकले जोश से जुबान से सेना बना दी, फौज सरफरोश फिर खून की नदियां बहा दी, वरना मंसूर वो पहन के चले कफन, एक ही जुनून सबसे पहले मेरा वतन। बंगाल बाग कहाँ गए, कैसा हुआ हादसा था, राज रहे राज क्या कुर्सी का मामला था। बस इनकलाब हर बोली में, गयो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में, डोली में बस इनकलाब हर बोली में, गयो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में, बलिदान। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट में, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उठा देना और मेरी माँ के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोला, खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। माँ को रोका सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश में जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो
कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। Grade 8 for a speech. आदरणीय अध्यापकगण, अभिभावकों और प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 79 वर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक मंगल अवसर है। हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ब्रिटिश राज से हमें मुक्ति मिली थी। आज हम लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और यह इतिहास में सदा के लिए उल्लिखित हो चुका है। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिनके कठिन संघर्षों की वजह से हमें अपनी आज़ादी का उपभोग करने के लायक मिले हैं और अपनी इच्छा से खुली हवा में हम सांस ले सकते हैं। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे आज़ादी के असरदार तरीकों के बारे में हमें बताया। भारत ही हमारी देश को आगे की ओर ले जाए और हमारे देश को सबसे अच्छा देश बनाए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि हमारा देश हर साल हर क्षेत्र में विकास करता रहे ताकि पूरी दुनिया में हम पर एक दिन गर्व हो। धन्यवाद। Speech. I now invite our beloved principal, Reverend Sister Tekla Mary, to address the gathering. Hello, citizen of India, my dear teachers and students, good morning and happy Independence Day. We have seen so many programs about how we got the freedom from British rule. Maybe it will be up to the stage or we will bring to our day-to-day life. It is a question mark to each and every citizen of our country. Bhagat Singh, he was very young man when he was hanged. So he was just all the time in the prison also he used to read the books. They informed him, early morning we are going to hang you. He was not worried about that. For the sake of country, I am ready to do. Then suddenly they changed the plan. They came and asked, within 3 minutes we are going to hang you. He did not worry. Yes, only 3 minutes you have given me time. I am reading one book. Let me complete the book. But I am little bit worried whether within 3 minutes I can able to complete these books. That's what he taught to us. If you read, if you educate, you will be the good citizen. In 2007, when our Dr. Abdul Kalam was a president of India, Finland Prime Minister lady, she came to visit him. He asked how your country can become a #1 country. What did she say? Do you know? Just educate. Creatively you educate the people. Innovate. Give the education for the girl children. Because of the education, we became a #1 in our country. So, we as a citizen of India, what is our duty? Each and every person, whether we are poor or rich, whether we are any religion,
just education will give improvement for house, family, society, country. That's what all the leaders there gave the blood for our country. One more thing I can explain. Tirupur Kumaran, we heard, maybe not small children, it is in the lesson also. He was just 24-year-old when he went for the rally to get the freedom. He took along with him other 8 people only joined with him. He went for the rally, for the procession with a flag in his hand, national flag. To protest that people, these 8 people, 30 police was appointed by British rule. 30 police. Just for the 8 people, youngsters. What was their aim? Leave the flag and go. But they did not leave. They started beating in the hand. They got pain. Everybody left the flag except Tirupur Kumaran. He died holding the flag in his hand. All the 30 police were started attacking him. Then he died there itself, but the flag was in the hand. That much they had the attachment with the country. Now it is a question mark to each and every one of us. What attachment I have? What contribution I am giving to my country? That is the question mark to each everyone. What I am going to do? What is my contribution? Whether I am attached with the unwanted things, whether I have the unity. Maybe we are filled with so many religious caste, whether we have the freedom, some depression, some collecting the things, whether am I. It is each and every citizen's responsibility. So my dear children and my dear citizen of India, it is my kind information and request what way I am going to contribute to my country, what I am going to do, what I am doing. But there is no freedom. We speak so many things. Recently, 3 sisters are arrested in North for unreason. After 5 days they released. What is my duty? How I am respecting? Our Kalam went to the Tirupati temple to pray for the country. Being a Muslim, he went to Tirupati to pray for the country. So maybe we are, by religion we are divided, but we have the unity and diversity in our country. So let us cooperate with that. Thank you for each and everyone. God bless us. Jai Hind. Words which is needed for our society. Now I call upon Kritika and team for a beautiful dance. उजले शोले उजलते शोले जिगरा शोले मेरे शोले जल जल शोले बेचैन शोले धरती हिलाने के हर सीमा तोड़े जिस पे मर मिटे लहरा वो ठंडा हर गली घर में है लोहे का बंदा जिस पे मर मिटे लहरा वो ठंडा
बजाओ धमका स्वाद फतेह का देखो तैया तारों में चमके यशनाम जिनका तेरे मेरे दिल पे अब लिखा है नाम इनका जिस पे उम्र में के लहरा वो झंडा हर गली घर में है लोहे का बंदा जिस पे उम्र में के लहरा वो झंडा हर गली घर में है लोहे का बंदा जिस पे उम्र में के लहरा वो झंडा हर गली घर में है लोहे का बंदा जिस पे उम्र में के लहरा वो झंडा हर गली घर में है लोहे का बंदा I call upon Mrs. Sunita Mary Ma'am to express a word of gratitude on our behalf. So, respected chief guests, dignitaries, teachers, parents, and my dear students, on behalf of our principal, Reverend Sister Tekla, St. Rock's Girls High School, it is my privilege to extend a heartfelt gratitude to each one of you for making today's Independence Day celebration a grand success. First and foremost, I thank our chief guests for gracing this occasion with your valuable presence and inspiring words. Your message has truly ignited patriotism in our hearts. A special thanks to our principal and management for their constant guidance and support in organizing this event. I express my sincere appreciation to all the teachers who worked tirelessly to prepare our students and guide them in today's performance. To our students, you were the soul of this program. Your speeches, songs, dances, and skits filled us with pride for our motherland. A warm thank to our parents and guests for taking time out of your busy schedules to join us in honoring our nation. I also wish to thank the supportive staff and volunteers who worked behind the scenes to ensure everything went smoothly. Finally, to every one of you present here, your participation and enthusiasm made the celebration memorable. Let us carry forward the spirit of freedom, unity and responsibility as proud citizens of India. Thank you. Jai Hind. Let's pray for our brethren who dwell in poverty. Save us from disasters and calamity.